Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life with Dr. Muhammad Yousaf. And I am going to discuss the special excitatory and conducting system of the heart. But before that, one hadith. फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मशहूर हदीस है, अक्सर लोगों को पता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज हैं कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत पर फ़र्ज़ है। इल्म की अहमियत बताने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है। इसमें ज़रा सी तफसील ये है कि कौन सा इल्म, क्या हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि एस्ट्रोनॉमी भी सीखे या डॉक्टर भी बने या कोई भी साइंटिस्ट बने? वो भी इल्म है, बिल्कुल सारे इल्म सीखने हैं, ये इल्म में कोई तफरीक यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये फ़रीदतुन जो बताया हुआ है ना अल्लाह पाक ने कि फ़र्ज़ है। अब एस्ट्रोनॉमी सीखना तो फ़र्ज़ नहीं है ना, तो कौन सा इल्म फ़र्ज़ है? तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तशरीफ़ फरमाई हुई है। एक तो एक हदीस है कि अल इल्म व इल्मान के दो किस्म के इल्म हैं, इल्मुल अदयान व इल्मुल अबदान, के दीन का इल्म और उसका इल्म। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा है। मुबारक हदीस है, अली के फ़ज़ाइल, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल में से हदीस है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन सा इल्म जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म लेकर आए, वो दीन का इल्म। इतना दीन का इल्म कि जिससे हम 24 घंटे की ज़िंदगी दीन के मुताबिक गुजार सकें, वो हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। वो वाला इल्म फ़र्ज़ है कि इतना इल्म कि हम पूरी ये अपनी ज़िंदगी 24 घंटे की ज़िंदगी, बल्कि पूरी ज़िंदगी हो गया ना, 24 घंटे जब हो गए, पूरी ज़िंदगी ईमान उसके मुताबिक गुजार सके, उतना इल्म फ़र्ज़ है, उतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे ये पता नहीं था, नहीं, वो उतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक समझ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्पेशल एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट. Heart comprises of muscle fibers. Amongst these muscle fibers, some muscle fibers are specialized for this purpose. They are responsible for excitatory and conductivity property of the heart, well developed excitatory and conduction property of the heart. This is the special function of this system, that is generation of rhythmical electrical impulses and conduction of these impulses in whole of the heart very quickly. So that is the otherwise conduction is the property of every muscle fiber, but these are they are specialized for this excitation as well as conduction. So the result of this activity in this system, that is special excitatory and conductive system, this results into the sequence, that is the atria contract 1/6 second before the ventricular contraction, and so this results into the primer pumping function of the atria, and then the ventricle, they contract as unit atria as well, they contract as one unit as well. But ventricle contract, and this contraction, this pumping force is required for the proper action. If something is wrong with this system, excitatory conducting system, then there may be abnormal conduction. This conductive system, something wrong with that, abnormal conduction may result into loss of rhythm, arrhythmia. When rhythm is gone, when regular rhythm, what is rhythm? Something repeated at regular interval. Cardiac cycle we have discussed, it is being repeated at regular interval. So if that regularity is lost in that is known as arrhythmia. Something wrong with this excitatory and conducting system will result into arrhythmia. Or if there is not proper conduction,
say ventricle contract as one unit because there is proper conduction throughout the ventricle. They act as one unit. If something blocked there or something wrong with that, then the reduced pumping effectiveness, this may not be acting as one unit. So there will be pumping effectiveness, pumping ability of the heart that will be reduced. So we are going to talk about these systems. Different parts of the then a word of caution. That is, these are actually muscle fibers, but they are not contractile. They have got the developed property of conduction only. Contractility, actin and myosin elements are missing, almost missing in these, so they don't contract. So different components of this special muscle fiber, they are muscle fibers, but they are special, are the sinoatrial node, and commonly it is known as SA node, sinoatrial node. Then there is internodal pathway going to the second node, that is the AV node. In between these nodes there are internodal pathways, and atria are also conducting, but these are the special conducting system we are talking about. So AV nodal pathway and then AV node. Now internodal pathway and AV node, and then from the AV node another bundle of His, the bundle of Purkinje fiber emerges from the AV node, and this is known as bundle of His, or it is also known as AV bundle, atrioventricular bundle, it is also known as. Then it bundle branches into two main branches, that is left and right bundle branches, and then the distribution, smaller fibers which are spreading throughout the ventricular muscular mass, they are known as Purkinje fiber. So these are the main components of this special excitatory and conducting system. So we will discuss all of these individually. So conducting system of the heart, this diagram includes this blue. This is SA node, internodal pathway we are going to see. This is SA node. Its location we are going to talk about in next slide. This is SA node, and then this is AV node. And between these SA node and AV node, there are these three internodal pathway. Otherwise, impulse can spread through the atrial muscle. This is atria. These bundles are present in the atrial muscle. Through the atrial muscle, conduction is possible, but these are fast conducting pathways, special conducting system. So they are known as internodal pathway. There are three. 1, 2, 3. They are known as anterior and middle and the posterior internodal pathway. We can simply call them as anterior, middle and posterior. But they have got name as well. If you can remember the name, that is anterior is also known as Beckman internodal pathway. Then the middle one is the Wenke-Beck internodal pathway, and the posterior is Thoral. You can simply remember anterior, middle and anterior. So these are internodal pathway. Then the second node, that is the AV node, AV node. This is the AV node. I should go back. This is AV node, and from here the bundle is starting, and these are two branches. We are coming to that next slide में इनको हम elaborate करेंगे. These are the left bundle branch and right bundle branch, and their fibers spreading throughout the ventricle. So this is the main pathway. आगे ये देखने. These are the two left bundle branch, right bundle branch, and it is, you can see these bundle branches are on each side of the septum between two ventricles. दो वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम है उनके दोनों साइड पे, and they are running that, and then they are going back to the base. This is known as base of the heart. तो apex की तरफ आके they are going back to the base of the heart. Now this a rough diagram showing you this is AV node. No, sorry, this is AV node, and this is the bundle of His. Starting from the AV node, this is bundle of His, and it has got two bundle of His. It has got two branches. Right bundle branch, पिछली डायग्राम में नजर आ रहा था वो, ये ज़रा ज़्यादा बड़ी करके डायग्राम है. This is right bundle branch. This is septum. ये septum के इस साइड पे है, and left is on the left side. So right bundle branch
and then left bundle branch. Left bundle branch, in most of the cases, it is divided into two fasciculi. This is divided into two fasciculi, anterior fasciculus and posterior fasciculus. This one is posterior fasciculus, and the other one is the anterior fasciculus. Both you can call them as the left bundle branch. Those are both are the parts of the left bundle branch, and it is running along the septum, and then it is branching, and it is then spreading on the toward the base of the heart. So this is special, and then the rest of the fibers are known as Purkinje fibers. Actually, the fiber present in these bundle branches or bundle of hairs, they are also Purkinje fibers. लेकिन वो बड़े बड़े बंडल बने हुए हैं, उनका नाम बंडल किया हुआ, they are composed of Purkinje fiber. So these are rest of the Purkinje fiber spreading throughout the ventricular mass. So this is Purkinje fiber. This is just naming the special conducting system of the heart. So conducting system of the heart, SA node, now its location now in greater detail. SA node is located near the junction of SVC, superior vena cava. Superior vena cava, big vein which is bringing the venous blood to the right atrium. Superior vena cava and inferior vena collect, they open into the right atrium. So superior vena cava taking the blood from the upper part of the body, head and neck, into the right atrium. So near the junction of superior vena cava, near jahan pe wo open kar rahi hai into the atrium, and wall of the right atrium, it is in the wall of the right atrium. Now you can see this is as that is superior vena cava. This one, this is superior vena cava, and it is opening right atrium mein, and this is the SA node. SA node is located here at the near the junction of superior vena cava into the right atrium. Now the size of this SA node, sinoatrial node, size is 15 into 5 into 1. 15 millimeter long, 5 meter wide, and 1 millimeter thick. So 15 into 1 into 5, that is the size of this. Diameter of the fibers, myofibrils, muscle fibers, that is 3 to 5 micrometer. 3 to 5 micrometer, and structure of these myofibril is not actin and myosin. It is not contractile. So mainly composed of myofilaments, which have almost no contractile filaments. What are contractile filaments? Actin and myosin. They are not present. Actually, these cells are known as pacemaker cells. P cells भी कहते हैं. Pacemaker cells, they are not contractile. They are for the generation of action potential and spread of the action potential. So pacemaker of the resting membrane. This is very important. This part. Resting membrane potential in these muscle fibers, in these pacemaker fibers, is very low. It is only minus 55 millivolts or minus 60 millivolts. In ventricular muscle, it is minus 85 or minus 90 millivolts. It is only minus 55, minus 60. What is the importance of this? It is almost nearing toward the where the sodium channels have been blocked. Sodium channels, fast sodium channels, they open and they close much before this resting membrane potential. So there is no role of fast sodium channels here. So resting membrane potential is only minus 55. That means they can be depolarized very quickly, very easily. Because the already resting membrane potential is very low, only minus 55 or minus 60. 85 को 0 लेके जाना मुश्किल है, 55 को 0 पे लेके जाना आसान है. So resting membrane potential is low. This is important. आगे इसको elaborate करेंगे. The threshold voltage for the opening of those threshold channels, and these threshold channels are actually calcium channels. Their voltage is threshold channel is 40 millivolts. यानी 55 तो resting membrane potential है. It is leaky to sodium again. यहाँ पे mention नहीं है, आगे mention किया हुआ है. But here I mention at resting membrane potential of minus 55, sodium is still entering into it.
What does that mean? That means this minus 55 is being neutralized. Entry of sodium will cause this minus 55 into minus 54, minus 53, minus 50. So already it is depolarizing because of the leakage of the sodium into it. And when this reaches at this minus 40 millivolts automatically, because of the leakage of the sodium, it can go into this level, minus 40 millivolts. Here the special channel, voltage gated calcium channel. Voltage, at this voltage, calcium channel will open, and then calcium will enter, and it will cause more depolarization. It will go to the upper level, and the full depolarization will occur. Impulse will be created, and that will, so as a nodal impulse will be created like that. So self-excitable due to the presence of calcium channels and sodium leak channel. This should be mentioned before that. Sodium leak channel, they cause the voltage to reach this area, level minus 40, and then the calcium channel will open and calcium will enter. This is again positive. It will cause complete depolarization of these muscle fibers. So as a note, again brief कर रहे हैं. As a note, resting membrane potential is minus 55, and the cause natural leakiness. Natural leakiness to sodium. This causes automatic depolarization without any other involvement of any other nervous system or any other stimulus. Natural leakiness of the sodium, this causes the depolarization. But fast sodium channel, as I have already, they are already inactivated at this level. They are activated almost minus 70 millivolts. This is already minus 55 millivolts. They have been inactivated. So there is no role of fast sodium channels here. So forget about this. There are no fast sodium channels here. They are we don't have to mention it. There is no role. So this causes leakage of sodium. This causes when it goes to the minus 40 millivolts, there is opening of the calcium channel, and this calcium channel threshold for voltage is minus 40, and this will cause the complete depolarization to the full level, and this is known as production of action potential. Action potential will be produced. Depolarization is because of this leakage, and then the calcium channels, and repolarization as everywhere. In the smooth muscles we have discussed, in the rest of the cardiac muscle we have discussed, it is the potassium channel. Potassium channel will cause repolarization, returning this again to minus 55 millivolts. Now the rate of generation of this action potential, इसको वापस करते हैं. ये तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा. कितने इम्पल्सिस पैदा कर सकती है ऐसे नोट. अगर उसको नर्वस सिस्टम ना हो, देयर इज नो सिंपैथेटिक, नो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई. देयर इज sympathetic supply as well as parasympathetic supply to SA node. Suppose there is no nervous supply to this SA nodal fiber. Their inherent leakiness and their inherent property of this will cause the production of impulse at what rate? It is about 80 to 100 impulse. That means अगर कोई भी nervous impulse ना आए, SA node can generate action potential 80 impulses per minute, 90 impulses per minute, or up to 100 impulses per minute. इसका मतलब है नर्वस सिस्टम को काट दो, इतने हार्ट रेट पे हार्ट चलेगा. हाँ, यहाँ भी बात कर देते हैं. हमारा हार्ट 72 पर क्यों चल रहा है? 72 पर इसलिए चल रहा है कि it has been supplied by the sympathetic as well as parasympathetic. Sympathetic tries to increase the heart rate, parasympathetic tries to inhibit, reduce the heart rate, and the balance is at 72 beats per minute. So हमारा heart rate 72 इसलिए होता है. अगर ऐसे नोड को खुद छोड़ दें तो heart rate will be more. So self-excitation as a note, we have described it. It is written here. Inherent leakiness of the SA nodal fiber to sodium. So sodium calcium leak. Some books also mention the calcium leak channels as well, but the sodium leak channels are important. So when it reaches to minus 40 millivolts, there is the opening of the special calcium channel. Sodium भी उसके साथ जा सकती है. Calcium channel, and it will cause the slow depolarization. Why slow? Because the calcium channels are always slow. In the ventricular muscle as well, as we were talking about the action potential in ventricular muscle, we saw they are slow to open and slow to close.
So they remain open for quite long time. So there is slow depolarization, slow to open and slow to close. So slow depolarization, which is known as action potential, and then the potassium channel will open at their specific voltage gated channel will open, and they will cause the leakage of potassium outside, and it will cause the repolarization again to minus 55 millivolts. That's how this action potential is generated. This diagram I have already shown to you. Resting membrane potential is minus 60, minus 55. Leakage of sodium is causing the depolarization to this level. When it reaches at this green dotted line level, that is the threshold level. Threshold potential, where the calcium channel will open, calcium will move in, and it will cause the complete depolarization. When it reaches here, there are voltage gated potassium channel which will cause the leakage of potassium out, and it will return this to again the same level, and it will be repeated again and again. That's how SA node generates action potential at a rate which we have mentioned between 80 to 100 impulses per minute. This is again the same diagram. This is the SA nodal action potential, and this is the ventricular action potential. Ventricular action potential, resting membrane potential is 90 millivolts, and it is not leaky. There is no leakage, but there will be when the action potential, this potential reaches here, there will be depolarization and voltage. Sodium channel will open somewhere here, those fast sodium channel, and those fast sodium channel will cause this upward stroke of this action potential in the ventricular muscle. उसमें फास्ट सोडियम चैनल काम कर, उसमें फास्ट सोडियम चैनल की जिक्र ही नहीं है, वो तो यहाँ की ओपन करते हैं. So there is no role of fast sodium channel in SA nodes. So action potential in SA node, ये डायग्राम भी पहले आपको दिखा चुका हूँ कि these are the different action potential graphs in different. ये ऐसे नोड का है, then atrial muscle का ऐसा होता है, AV नोड का ऐसा होता है, और अभी हमने ventricular muscle वाला ये ग्राफ अभी भी हम पिछली डायग्राम में देखा है. That's how ये हमने different parts of the heart में action potential का ग्राफ पहले भी दिखाया हुआ. Now that's SA node. कहाँ पे located है, कैसे इसमें impulse generate होता है और कैसे ये spread हो. Now the internodal pathway, those 3 internodal pathways. Action potential, AP stands for action potential. This spreads in the atrial muscle. Atrial muscle, वो internodal pathway भी हैं, लेकिन atrial muscle में भी quite fast, that is 0.3 meters per second पे travel करते हैं atrial muscle में. But special conducting system ये जो हैं, ये जो 3 internodal pathway हैं, उनमें 3 गुना speed इसकी ज़्यादा है. That is 1 meter per second. एट्रियल मसल में तो 0.3 मीटर पर सेकंड है, और इंटरनोडल पाथवे में इट इज 1 मीटर पर सेकंड फास्टर कंडक्शन. सो दीज आर द 3 बंडल्स. हमने उसका पहले भी नाम लिया हुआ है, एंटीरियर एंड मिडल एंड पोस्टीरियर, उनके नाम बैकमैन एंड विंकी बैक और थोरल, उनके नाम लिख लें. 3 इनमें फास्ट कंडक्शन होती है. सो इम्पल्स रीचेस थ्रू दीज बंडल्स वेरी क्विकली टू एवी नोड. एवी नोड इनका काम, और इसमें और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन हमें पता है 1 मीटर पर सेकंड, एंड वेरी क्विकली इट विल रीच द एवी नोड. एवी नोड में पहुंचेगा, एंड एवी नोड पे कब पहुंचेगा. नाउ यू कैन सी दिस इज शोइंग यू द टाइम आफ्टर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम SA node within 0.03 seconds. Within 0.03 seconds it reaches, these are the 3 internodal pathway, it reaches the AV node. AV node पे पहुंच जाता है. So AV node is located near the lower part of the interatrial septum. यहाँ 2 एट्रिया हैं, इनके दरमियान जो सेप्टम है उसके लोअर पार्ट पे, वेंट्रिकुलर सेप्टम से वो फाइब्रस AV सेप्टम से ज़रा सा ऊपर. So it is lower part of the interatrial septum. सेप्टम बिटवीन द वेंट्रिकुलर एट्रिया से पहले है. तो ये हम कहेंगे एट्रियम में है. इट इज इन द इंटरएट्रियल सेप्टम, ये यहाँ पे लोकेटेड है. सो ये दिस इज द इंटर आर्टेरियोवेंट्रिकुलर फाइब्रस टिश्यू है विच इज सेपरेटिंग द एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल. इससे ऊपर है एवी नोड. एवी नोड इससे ऊपर है. सो इम्पल्स रीचेज हियर इन 0.03 seconds. There are 3 functional regions, forget about that. So 3 AV junction, ये जहाँ पे ये जंक्शन कर रहा है,
जहाँ पे एंड देन दी नोडल रीजन ये है एंड देन दी नोडल एंड बंडल ऑफ फेस, इसको बंडल ऑफ फेस कहते हैं, हमने कहा बंडल ऑफ फेस पे ये नोडल फाइबर है. बट स्पेशल थिंग अबाउट दिस एवी नोडल fibers is that is fiber diameter is small. जितना स्मॉल डायमीटर किसी फाइबर का होगा, चाहे नर्व फाइबर है या मसल फाइबर है, कंडक्टिंग फाइबर है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इज लेस जितना, सो दे आर वेरी स्मॉल फाइबर. एक तो छोटा होने से कंडक्शन वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड. दूसरी बात यह है फास्ट कंडक्शन हार्ट मसल में क्यों है? बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ गैप जंक्शन. वो इंटरकलेटेड डिस्क जिसको हमने नाम लिया था गैप जंक्शंस में, तो जिसमें से आयनिक ट्रांसफर इज वेरी क्विक. दोज लैग जंक्शंस आर सिकेंटी लेस, दे आर लेस नंबर ऑफ गैप जंक्शन इन द एवी नोडल फाइबर. उसका रिजल्ट क्या होगा? यहाँ कंडक्शन वेलोसिटी इज फर्दर रिड्यूस्ड. एक तो फाइबर छोटे हैं और गैप जंक्शन भी कम है, वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड. इसका क्या मतलब है? यहाँ तक तो बड़ी तेजी से आई थी 0.03 सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी इतनी रिड्यूस हुई है कि इसने 0.09 सेकेंड कंज्यूम कर लिए हैं. इट पासेस इनटू दिस बंडल इन द 0.12 सेकेंड. 0.12 सेकेंड में एवी नोड में जाएगा और फिर उसमें से पास करते हुए वेंट्रिकुलर मसल में तब पहुंचेगा एट 0.16 सेकेंड. So there is a delay in the conduction of impulse at the AV node, which is known as AV nodal delay. आगे हमारी स्लाइड आ रही है. So less number of gap junction and degree size of the diameter of the fiber is the cause of reduced conductive velocity or AV nodal delay. In the AV node slow conduction, then this is known as AV nodal delay, which is about 0.09 second. 0.03 हुआ था, 0.12 तक ये एवी नोड में इम्पल्स रुकती है. स्लो कंडक्शन होती है, रुकती नहीं है. कंडक्शन स्लो हो गई है तो हम कहते हैं ये डिले हो रही है. तो इट इज डिलेड फॉर दिस मच टाइम 0.09 सेकंड तक. अब 0.12 सेकंड पे ये आगे जाएगी बंडल ऑफ फेस में. बंडल ऑफ फेस से फिर वेंट्रिकुलर में पहुंचे 0.16 सेकंड लग जाएंगे. So conduction velocity in these fiber is only 0.01 to 0.1 meters per second, जबकि हम ऊपर देख के आए 1 मीटर पर सेकंड. ये उससे 10 गुना कम स्पीड है, इसमें 10 गुना कम स्पीड. So the inherent rate of generation of action potential is 40 to 60. ये क्या लिखा हुआ आ गया? If SA node is not there, SA node किसी जगह से ब्लॉक होगी, डिस्ट्रॉय होगी, ख़त्म होगी. पेसमेकर, दिस विल टेक एज पेसमेकर. ये फिर हार्ट को चलाएगी, लेकिन अपना इनहेरेंट जो इसका रेट है जिस पे ये एक्शन पोटेंशियल पैदा कर सकती है, दैट इज बिटवीन 40 to 60. तो हार्ट रेट इतना रह जाएगा. इसका अपना इनहेरेंट फायरिंग रेट जो है, जैसे हमने कहा कि हार्ट का एवरी पार्ट इज ऑटोमेटिक, वो खुद एक्शन पोटेंशियल पैदा कर सकता है. ये भी एक्शन पोटेंशियल पैदा कर सकेगा. अगर ऐसे नोड से ना आ रहा हो तो ये काम करता. ऐसे नोड वाला इसको रिफ्रैक्टरी बना देता है, वो पहले पहुंच जाता है. इसके अपना फायर करने से पहले रिफ्रैक्टरी हो जाता है. तो अगर इसको फायर करने की इजाज़त हो, इट विल फायर एट अ रेट ऑफ बिटवीन 40 to 60. सो हार्ट रेट इतना होगा. सो एवी नोड इट कैन टेक ओवर एज पेस मेकर, अगर वो पेस मेकर ओरिजिनल ऐसे नोड ख़राब हो गए. So AV nodal delay, we explained it. This slide is the explanation. Impulse reaches AV node at 0.03 second, and there is delay of 0.09 second, and the total time consumed in AV node तक पहुँचते निकलते 0.12 सेकंड लग जाते हैं. एंड फर्दर 0.04 टाइम्स बंडल ऑफ फेस में लगता है. इसमें लगेगा तब बंडल ब्रांच में जाएगा तो वेंट्रिकुलर मसल को सप्लाई होगा. एंड देन द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल स्टार्ट्स आफ्टर 0.16 सेकेंड्स आफ्टर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. ऐसे नोड में जब पैदा हुई तो उसके 0.16 सेकेंड के बाद इस वक्त तक एट्रिया अपना कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं. एट्रिया अपने इस वक्त डीपोलराइज होकर प्राइमर पंप वाला काम कर चुके होते हैं. सो 0.16 सेकेंड के बाद वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है. अभी एंड नहीं हुई, स्टार्ट होती है. स्प्रेड करेगा, उसमें भी टाइम लगेगा. एट्रिया कंट्रैक्ट अहेड ऑफ द वेंट्रिकल. बिकॉज ऑफ दिस एवी नोडल डिले इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द atrial contraction before the ventricular contraction. So atria act as primer pump इस वजह से.
नाउ परकंजी फाइबर आगे बंडल ऑफ हिस है या उसके ब्रांचेस हैं या आगे ब्रांचेस हैं, वो सारे परकंजी फाइबर्स हैं। तो दी परकंजी फाइबर ये सारे जैसे हमने कहा ये सारे ये भी परकंजी फाइबर हैं और इसके आगे ब्रांचिंग भी परकंजी फाइबर्स हैं। लार्जेस्ट फाइबर इन दी हार्ट, लार्ज हैं तो फिर क्विक कंडक्शन होगी, दे आर लार्ज क्विक कंडक्शन अराइजिंग फ्रॉम द बंडल ब्रांचेस, उससे ब्रांच करेंगे। देयर इज हाई नंबर ऑफ गैप जंक्शन, क्विक कंडक्शन इस वजह से भी होगी एंड मोर परमेबिलिटी होने की वजह से। एंड कंडक्शन वेलोसिटी इज 1.5, वो एवी नोडल फाइबर में हमने 1 कही थी, ये उसे 1.5 नहीं 2 3 4 अप टू 4, इतनी क्विक कंडक्शन है इन दीज फाइबर। सो वेरी क्विक कंडक्टिंग फाइबर्स बिकॉज ऑफ द लार्ज एंड गैप जंक्शन ज़्यादा होने की वजह से वेरी क्विक कंडक्शन। वो जो इंटरनोडल पाथवे है जो 1 मीटर पर सेकंड था, ये उससे भी ज़्यादा है, तो 4 मीटर पर सेकंड तक जा सकती है। तो इसकी कंडक्शन वेरी फास्ट है। तो फंक्शन तो वही हो गया, रैपिड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स थ्रू आउट द हार्ट, थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स, थ्रू आउट द हार्ट। अब हार्ट का वही पार्ट रह गया वेंट्रिकल, सो वेरी क्विक कंडक्शन अकर्स इन ऑल दिस। नाउ इसको हम सम अप करें, लास्ट स्लाइड है ये हमारी, इसको सम अप करें तो हमारी सूरत हाल क्या होती है इन दी एटियल मसल। अगली स्लाइड पे डायग्राम भी आ जाएगी। बंडल ब्रांचेस स्प्रेड अलोंग दी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम टुवर्ड दी एपिक्स, पहले मैंने बताया, एंड दे देन द परकंजी फाइबर स्प्रेड इन दी वॉल ऑफ द ventricles, and Purkinje fiber penetrate deep into the muscles and they join the muscle के बाद जनरल मायोमेट्रियम का हिस्सा बन जाते हैं and they become the continuous with the muscle fiber। उसकी ब्रांच ये भी मसल फाइबर ही हैं, इनमें कंट्रैक्टाइल एलिमेंट नहीं है, फिर मसल फाइबर के साथ मर्ज हो जाएंगे एंड दिस विल कॉज दी। ये स्प्रेड कैसे है, फ्रॉम द एपेक्स अलोंग द वॉल टुवर्ड द बेस, टुवर्ड द बेस ये स्प्रेड करेगी, पहले नीचे जाके टुवर्ड द बेस जाके लास्ट पार्ट आती वेंट्रिकुलर मसल टू बी डिपोलराइज इज नियर द बेस, हम आगे डायग्राम में देखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इन द वेंट्रिकुलर मसल इज 0.3 to 0.5 मीटर पर सेकंड। ज़ाहिर है ये तो आम मसल फाइबर है ना, इनकी भी वेलोसिटी अच्छी खासी है, लेकिन उनके मुकाबले में तो परकंजी फाइबर जैसी तो नहीं हो सकती। नाउ सारा रिजल्ट इसका ये बनता है, ये डायग्राम आपको दिखा रही है, आखिरी स्लाइड है। ये ऐसे नोड से फाइबर हुआ, 0.03 सेकंड पे एवी नोड पे पहुंचा, 0.16 सेकंड पे बंडल ब्रांच में पहुंचा और एटीएल फिर उसमें स्प्रेड किया टुवर्ड दी, और फिर इसमें 0.17 सेकंड पे ये जगह डिपोलराइज हुई दोनों साइडों पे, 0.8 सेकंड पे दोनों साइडों पे वेंट्रिकुलर, और 0.19 सेकंड पे ये जगह डिपोलराइज हुई, और लास्ट पार्ट जो डिपोलराइज होता है दे लेफ्ट वेंट्रिकल का बेस के पार्ट वाला जो 0.22 सेकंड में ये डिपोलराइज होता है। ऐसे नोड से जनरेशन के बाद 0.2 आखिरी डिपोलराइजेशन जो हो रही है 0.2 सेकंड के बाद, 0.22 सेकंड के बाद डिपोलराइज होता है। दैट्स हाउ दिस इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द मायोकार्डियम। तो जब ये पूरा ये डिपोलराइज इतना क्विक है, कितना क्विक लगा है, ये 0.16 से शुरू है, 0.12 पे ख़त्म हो गया, तो क्या मतलब हुआ 0.06 सेकंड लगे हैं टोटल। कितना टाइम लगा है पूरे वेंट्रिकल को डिपोलराइज में, 0.16 से 0.22 तक 0.06 सेकंड, और इनमें लगा था 0.03 सेकंड। वो पहले हो गया, डिले होने की वजह से वो पहले कंट्रैक्ट कर गया, अगले 0.06 सेकंड भाई 0.06 सेकंड में पूरा वेंट्रिकुलर मसल डिपोलराइज वो कंट्रैक्ट करेगा एंड दिस विल पंप द ब्लड इनटू। सो दैट्स हाउ impulse is generated in special conducting system of the heart. It is transmitted throughout the myocardium and then it will be causing the contraction of the muscle as one syncytium and pumping ability of the heart is achieved. Now next हमारा we will discuss very important area इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिस्कस करेंगे, और फिर आखिर में ये कह देते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, जितने स्टूडेंट को आप फॉरवर्ड कर सकें, ये आपका सदका जारी आपका होगा। आप लोगों को जब स्प्रेड करेंगे, अगर उनको कुछ फ़ायदा होगा, उम्मीद है कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा, आपका भी सदका जारिया होगा, मेरा भी सदका जारिया होगा। तो लोगों तक भी पहुंचाएं और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।